NetVRk. Three years ago, we began building a virtual reality universe where anyone can use their imagination to create their own virtual worlds. Today, we are thrilled to demonstrate the power of NetVRk's VR Sandbox, where users can seamlessly create their own virtual universe, meet other people, earn money, and so much more. All you need are NetVRk's user-friendly VR tools and the power of your imagination. The first incredible thing about NetVRk is the way the land is created. All locations in NetVRk are uniquely generated by our proprietary software, meaning no mountain, river, forest, or other natural formation is similar to another one in NetVRk, making each piece of land completely unique. Users can also redesign the land by changing the land generation settings, or easily sculpt on top of it using our user-friendly sculpting tools. After creating their land, users can, for example, drag and drop complete buildings or other items onto their land, which are sourced from NetVRk's marketplace. In addition, designers, developers, and users will be able to upload their own supported assets and instantly offer them for all in-app purchases or trade them with other users using NetVRk's marketplace. NetVRk enables users to quickly test their creation by switching between creative and immersive modes. We want users to be able to create their own unique virtual place as easily as it is to open a page in current social media networks and immediately invite their friends and other visitors for different purposes such as socializing, gaming, training, and even work. We have developed tools to help users build better, faster, and easier. With our tools, users with no technical computer skills can perform a variety of tasks such as cloning, deleting, aligning, adding physics, and more. Users can also interact with elements that have physical attributes such as gravity, weight, or breakability. NetVRk also enables building assets, which are individual shapes that can be connected together, creating a variety of structures with their own unique purposes. We envision many future use cases, such as training simulations, education, architecture, product demonstrations, and even virtual blogging. Users are also able to create games on their land. Creating games in NetVRk is as easy as simply dragging and dropping ready-to-use gameplay assets from the marketplace straight onto the land. Users can seamlessly switch between creation and immersive modes and easily create and play the game they've always wanted to make, but could never do because of the technical skills required to make computer games. You can see here how a game is created in NetVRk using interactive game elements such as traps, weapons, enemies, explosive crates, collectibles, and more. Our beta testers have reported that building a game in NetVRk doesn't feel like work. Rather, NetVRk offers a fun, easy, and thrilling creative process that naturally evolves as users progress. At NetVRk, the possibilities are as endless as your imagination. So are you ready to join the VR revolution? Please visit NetVRk.co to learn more today. All right. So that was the introduction for the coin that we are going to discuss today. I'm going to introduce you and talk about it in English and Urdu, both languages.
Um, but before we go there, let's see. Um, I would like to actually do the TA on Bitcoin, how the Bitcoin is doing right now, and the crypto market is doing right now. Just a quick review of that, and then we'll move on to our new कॉइन सो जैसे कि मैंने कहा कि हम उसको नए कॉइन के जो इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में दिखाया आपको उसके बारे में बात करते हैं एक क्विक एनालाइज कर लें क्विकली के मार्केट्स में क्या चल रहा है प्राइसेस क्या चल रहे हैं बिटकॉइन के उसके बाद फिर हम जाते हैं सो Bitcoin is holding its position right now at $44,000. In the morning when I did the TA, I told you guys that this is a very important level which is holding right now. Bitcoin is holding up nicely. So the thing is that I'm on the 4-hour chart, and right now you can see that the volume is very low, pretty low, and the MACD on 4-hour chart is trying to turn into the other side. It is changing its color right now as we speak. It is showing a lighter green. So after that, it can flip to the red. But again, as I said, we did broke above yesterday, and then we have been in the bullish territory since morning. But you can see the volume, the histograms of the MACD, the volume at the bottom is very low. It's not high. So that is one concern. The other thing is that that we are at the top of the Bollinger Band. So obviously, and then we almost touch like the almost the top of the RSI levels of this range. So the technicals kind of burned out this morning or this afternoon, and that's why the Bitcoin kind of stalled at this position and try to recoup the energies, or I would say a lot of these gains actually transferred just now to other altcoins, and we see that the big pump in other coins, the other altcoins that we have seen. Um, so it's kind of a wait and see position right now. Bitcoin is in a very decisive position, I would say, because from here another breakup can happen possibly. There is no bad news out there anymore. There is no suppression. I would say like from anywhere from Feds hiking interest rate right away. Not that kind of news is there. The Russians are stepping back. All the other, the fundamentals, I would say, is not really bad looking. Plus, if I see a very important 3-day chart, that shows me that we are well underway, and this is very important. That I told you guys that this 3-day chart, on this 3-day chart, whenever this green or red signals comes up, it really plays a significant role. Whenever green signal, we saw all-time high. Now the red signal from the top, we saw that the bottom, just the local bottom, recent bottom. So now we have that on 3-day chart. This is a good sign. But and again, the MACD is the MACD is green. On momentum wave, there is a green dot. Everything looking bullish, but again, the volume is very low. That's my concern. The volume is very low. Now, this 3-day momentum, 3-day chart, green dot should convert into a weekly chart before I 100% I can show you that yes, it's a bullish sign now. The market's 100% go up. There's no looking back. But we haven't seen that green dot or green signal. We have seen the green dot on the momentum wave of the market cipher, and we can see that the MACD is trying to converge and it's changing its color to the lighter uh, red, lighter red, and then that shows that if and only if this momentum continues for maybe next couple of days and it turns to the upside to the green,
then we might see, and very we are very close. If you look at this green line here, that needs to be crossing that green dotted line, that green BGMC confidence line. If it crosses that green dotted line, then we'll see a green buy signal here, and this is not too far. So it's just a matter of a day or two. Then if we see on the weekly chart, we see a green buy signal, that is it. This is the confirmation that we are going for sure. This is not a dead cat bounce. Like a dead cat bounce is, if you throw a cat from a distance, from third or fourth floor, from a height, and if it's a dead cat, it just go at the bottom and then just bounce a little bit. Very animal cruelty kind of jargon, but what I can say. So that's kind of thing is there, that could be a dead cat bounce, because we have seen this shooting star candle here. Just last week was a shooting star candle, when and it's not a good sign. It means that prices will go down here, and that is my concern. These two things are my concern, that we haven't seen a buy signal on weekly chart yet, and there's a shooting star candle which shows that the bears have really good control in this price ranges, around $46,000. So if we test again, we go again over 45 and try to go to $46,000 range, that is my range to watch out. But right now we can see that we are trying to hold above $44,000, and right now we just dipped down under $44,000. So that is my concern, that we need to jump right back over $46,000 if we have to continue this trend, and we need to see a green artificial intelligence, oryx artificial intelligence green buy signal. If you want to see on the weekly chart, that entails us, that tell us that okay, now we are going into bullish territory. And you can see that in the Bollinger Bands, the midpoint is that 20-day moving average. We are under, in the weekly chart, we are under this trend line, and this trend line is very important. That shows that if we are in bearish mode or a bullish mode, whenever the Bitcoin is on top of that, you can see that the price action is going up. You can see the price action is going up. Whenever it's down below this this trend line, we've seen tremendous drops, and we are still in that territory. That's the point that I want to make. So that is why it's very crucial that this price target should get hit into next couple of days. The Bitcoin should continue above $46,000 range for next 2 to 3 days. Then we'll be able to see a green dot here, green buying dot in the weekly chart. That will be the signal, for sure signal, that we are going towards all-time high. So we'll continue watching this on daily basis, this chart. Now come back, let me just quickly explain it in Urdu, then we'll go to our project for today. So जैसे कि मैंने बताया कि हम जो टारगेट्स देख रहे हैं, वो बिटकॉइन के प्राइस टारगेट्स, वो वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि ये इस वक्त अभी भी बेयरिश मोड में है. नीचे यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज का जो लाइन है बीच की, उसके नीचे है, और अभी तक ये रेड जो सेल का सिग्नल है वो प्ले आउट कर रहा है. अभी तक इसमें ग्रीन बाय सिग्नल नहीं आया है, और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जब तक हम इस 20 डे मूविंग एवरेज से के करीब या उसके ऊपर नहीं आएंगे, हम जो है वो हमें ग्रीन बाय सिग्नल नहीं देगा. और उसके लिए ज़रूरी है 46 को जल्दी ब्रेक किया जाए. 46 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पिछले वीक की जो कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, यानी ऊपर का जो इसका जो शेडो है वो बड़ा है, नीचे की बॉडी स्मॉल है. ये शूटिंग स्टार कैंडल कहलाती है, और इसका मतलब ये है कि बेयर्स जो हैं बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं यहाँ पर पोजीशन करके, कि अगर यहाँ इस लेवल तक 46 के लेवल को टच करने की कोशिश करेंगे, आप तो नीचे भेगे जाएंगे बहुत ज़ोरदार तरीके से. इसको हमें बहुत वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है. $46,000 के जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये क्रॉस कर पाएंगे अगर हम, तो फिर आगे ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश कर सकते हैं. और होता है ग्रीन वीकली के चार्ट पे अगर ग्रीन बाय सिग्नल आता है, तो वो एक फिर बुलिश साइन होगा कि अब हम ऊपर ही ऊपर जाएंगे. अभी
ये डेड कैट बाउंस जैसे मैंने बताया वो हो सकता है कि नहीं, जैसे बिल्ली को आप किसी ऊपर चौथे पाँचवें माले से मरी हुई बिल्ली को अगर फेंकें तो गिरने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगी और फिर गिरेगी वापस, वो डेड कैट बाउंस होता है। तो ये वो हो सकता है ये डेड कैट बाउंस। और ये नीचे की तरफ जो नीचे के टारगेट्स हैं बहुत ख़तरनाक वाले $20,000 वाले और इस तरह के, उन तक जा सकता है फिर ये बिटकॉइन बहुत तेज़ी के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, देखना है इसमें क्या बिटकॉइन अगले 2-3 दिन में या इस हफ्ते में क्या अपना प्राइस एक्शन दिखाता है। तो ये एक क्विक एनालिसिस थे अब तक के। बिटकॉइन जो है वो अभी भी जस्ट उसने बिल्कुल $10 से इस वक्त नीचे है 44,000। तो मैं कहूँगा 44,000 का जो अपना उसका जो रेंज है उसको मेंटेन किया हुआ है उसने। आ जाइए अब पहले इंग्लिश में देखते हैं हम आज के प्रोजेक्ट को, फिर उसको उर्दू में भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज़ द प्रोजेक्ट NetVRk. NetVRk is a metaverse project that has so many use cases that is amazing. And it touches the very core of gaming, that you just not able to play games and own land in this metaverse, but you can build your own games, you can build your own land, and you can transform your land the way you want it. So and it provides tools. It's not cheap, let me tell you this. For instance, to enter in this game and to play this game is not cheap. It's very expensive right now, especially when it's only available on Ethereum blockchain. It's very expensive. They have plans to go on multiple chains, on every available chain, I would say, in the market. But right now it's only available in Ethereum. All the products available in Ethereum network, and they are very expensive, including land sales, and I'll show you just now how expensive they are. But let's go through the project first. So the project offers you a basic token that you can use to purchasing and buying within the game and within the ecosystem. So you can try. This is the currency basically of this game, which is NTVRK. NTVRK is a ticker symbol for this currency, and right now is sitting on $2.5 per token. The tokenomics of this coin is very interesting. It is only 100 million coins available. The maximum supply is only 100 million coins, and then the right now is circulating supply is 41 million. So almost half of the supply is out there. Now, being said that the coins are very in limited supply, it's not like billions upon billions or trillions coins. So it's very limited coins are available for time being. And we have seen that with this kind of supply, the coin can jump into right back in the prices somewhere ranging around $50, $60, $70 range. We have seen it in Eternity chain case, that same kind of tokenomics. The prices jumped up $70 very quickly. So that kind of potential I'm talking about. It's not just 10x. We are talking about 20x, 30x, 50x maybe from here, and especially the way I'm going to show you the way that everything is structured and the things are rolling out right now. It is quite highly. I mean, possibility there's a high possibility that it will go really high, because just now it's ranked just around 3,000 coin market cap. So it can go up to like somewhere in 100 top 100 category, and to reach there, it can really jump. You can see the market cap is only $103 million market cap. So it can easily go to 1 billion or over billion dollar market cap. So 10x is very easy from here. So that is one thing. Now, the other thing is the tokenomics is amazing, right? And it has already reached all-time high when all the coins were flying high. It has already reached in November its top at over $7.
So for even to go all-time high from here, you are looking at more than doubling your price. So this is another thing that it has already been in that territory very shortly. So this is still not a bad buy, I would say. Two, although just recently it came up very nicely, almost 28%. And I would say if anything comes up like 28% or 30%, I would say just hold for a while. It may slow down a little bit, and that's what happened. That it reaches up. You can see that almost $2.70, and then it goes down back again a little bit, and then it is possible that it may go down further in short term. But I would say it's still a good buying place, because you never know. Tomorrow Bitcoin start rallying, and it jumps out $46,000 and start going towards its all-time high. All these coins, they will move really fast, because look at the market cap. It's really low market cap gem that I'm showing you right now. It can go really fast, really high. And the project, it's not like I'm talking about any meme coin or anything. It is based on a real strong project. The the project we are talking about is this. It is in the news. It is doing a partnership with every other big giants out there in the crypto gaming. Look at just Jurassic Punks. Look at these Jurassic Punks. They will be available to walk on those earth, those land that you could create on a NetVRk. So you can own these amazing, these cool Jurassic Punks. So this is another thing that is this is, and they are teaming up with right here with NetVRx. So there are so many. You can see that there's so many partnerships, right? So, and there. I would like to show you their collectibles. Their NFT collections are already on OpenSea, and I want to show you how much they are going for. The land. The land is going for yeah, here's the land. The floor price of the land is 0.689 Ethereum. So it's already in a very high prices. These lands are really going for like $2,000 $3,000 range right now. So the land is already up there and very expensive if you compare to any other metaverses like Kara, Pavia, and others. They are very expensive lands, and then they have different transports available. Their NFTs available that you can use in that metaverse. The floor price is 0.12 Ethereum. So again, these are not cheap. You need to spend your Ethereum, and the gas prices with all the gas prices, and then avatar. If you want to involve a different avatar, and make yourself an avatar, and use these avatar in the game. Almost floor prices almost one Ethereum. One Ethereum right now is $3,000. So imagine that. Then you have obviously some other bonus items that is still half of Ethereum, like $1,500, $1,600. So again, as I said, this is not to play this game is going to be expensive. It's not easy. The partners, you can see the list of the partners. Amazing, huge list of the partners. I think all everybody is involved here. You'll see all the big names here. Yeah. So they are partnering up with everybody. All the chains are here: Ethereum, Polygon, Solana, Cardano, Polkadot, Binance, XRP Ledger, Flare, Avalanche, uh,
Elrond, Phantom, Hedera chain. I mean, you if you are in the space for a month or 2 months even, you know all these chains, names of all these chains. The investor, look at the list of the investor. Metaverses, and now their team. It's not just one or two guys sitting in their garage and coding these. This is a huge project. I'm telling you. Um, all the social media is so active. Look at their Twitter account. Almost 100,000 k 100,000 followers. 100,000 followers almost. Very active social media. These are the items you have to look in any project to find out how good is, how big, how strong the project is, how strong the community is, how strong the partnerships are. So everything, I think, even if you are a big fan of Sandbox, Decentraland, you won't find all these things over there. Decentraland is very basic, the graphic wise, and the, a lot of people are talking about Decentraland, no doubt about Sandbox, but they are not that far that these guys have come. Very strong, very strong team, and very amazing graphics, amazing stuff you can build in there and play. But again, if you cannot afford to play this game and build within it your empires in there, you can at least participate in tokens. You can earn tokens that is native token, that is NTVRK token, which is still I would say $2.50, not that expensive. You can invest some money. If you, it's not a financial advisor. Again, if you can afford it, you can buy this token easily on KuCoin, especially. The token is available on KuCoin and Uniswap. Um, so this is the quick review of the coin and the project that I find out about it, and I did some research, and I'm really interested to myself involve in at some level in this project. NFT based metaverse is going to be huge, and if somebody is doing it things right, then definitely they are going to be successful big time. Huge potential here. Thank you very much for listening in Urdu, in English, now the Urdu audience. So आप लोगों ने जैसे कि विजुअल्स फॉलो किए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है. मैंने आपको इंग्लिश में जैसे कि विजुअल अगर आपने फॉलो किए हो तो देखा होगा कि इसके बारे में बताया कि इसकी ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स हैं इस प्रोजेक्ट की. और जिस तरीके के पार्टनरशिप इन्होंने किए हैं, तो मैंने जुरासिक पंक्स मैंने दिखाया. अमेजिंग ग्राफिक्स, ज़बरदस्त ग्राफिक्स. यू कैन ओन दीज NFTs एंड यू कैन सॉरी, फिर मैं इंग्लिश में शुरू हो गया. आप ये NFTs जो हैं बाय कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो मेटावर्स है इसका, NetVRk का. वहाँ पर आप अपनी लैंड बाय करके वहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, वहाँ पर आप पाल सकते हैं इन कैरेक्टर्स को, और इनके ये गेम्स क्रिएट कर सकते हैं खुद आप, और उन गेम्स को आप दूसरों को इनवाइट कर सकते हैं, वो खेलें उन गेम्स को आके. उनके लिए हर्डल्स, एनिमीज़ बना सकते हैं आप, और उनको जो है फिर आप कह सकते हैं कि जनाब ठीक है आप आइए और आप जो है वो खेलिए हमारे गेम्स को. और फिर वो जो गेम्स खेलेंगे उसमें मुख्तलिफ़ तरीके से जो इसका कॉइन है वो अर्न कर सकते हैं लोग, वो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं. वो आप अगर ज़बरदस्त कोई गेम बना लिया आपने, तो उसको उस गेम को जो है आप रेंट आउट कर सकते हैं लोगों को इन कॉइन्स के बस, जो कि ये कॉइन है NetVRk का. बहुत सारे यूज़ केस आप जनरेट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया. इससे कॉइन की जो टोकनॉमिक्स मैंने बताई, डिस्कस की, वो ये थी कि सिर्फ 100 मिलियन कॉइन है इसके, ज़्यादा कॉइन्स नहीं हैं. जिस तरह के आजकल कॉइन्स चल रहे हैं, जो अगर हम देखें तो ये बिल्कुल उसी के टोकनॉमिक्स हैं. जैसे कि इथेनिटी चेन वगैरह थे, उनके भी 100 मिलियन कॉइन थे, और हमने देखा कितनी तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ जो है वो $70 तक चला गया था इथेनिटी चेन.
तो इसका पोटेंशियल भी ऐसा हो सकता है कि अगर ये हिट हो गया और जिस तरीके से हो रहा है, जितना है पार्टनरशिप बना रहा है अपनी, तो ये भी इतना $70 $50, यानी कि यहाँ से जो है सिर्फ मैं 10x की बात नहीं कर रहा कि ये $2.50 से $25 पे चले जाए ऐसा कॉइन, बल्कि आराम से $50 या $70 या $75 तक भी जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं 30x 50x की यहाँ से, तो इजीली जा सकता है। अभी बहुत पोटेंशियल है इसमें। सिर्फ 100 मिलियन का मार्केट कैप है इसका, और अभी रैंक जो है सिर्फ 3000 मार्केट कैप के ऊपर रैंक कर रहा है। इजीली यहाँ से बिलियंस अपॉन बिलियंस में जा सकता है इसका मार्केट कैप, और बहुत ही इजीली जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ये ऊपर आ सकते हैं इसके प्राइसेस। तो अगर आप गेम खेलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल इस हिसाब से कि एक्सपेंसिव है उसके आइटम बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी सिर्फ इथेरियम के ऊपर उन्होंने उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अभी मुझे ये देखना है कि जब ये दूसरी चेन्स के ऊपर, कार्डानो के ऊपर और बाइनेंस के ऊपर इसको लेके आएंगे तो वहाँ प्राइसेस क्या होंगे। अभी तो बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे कि मैंने दिखाया सबको कि इसकी अगर आप लैंड ख़रीदने जाएंगे तो इसकी कम से कम भी लैंड जो है वो 0.689 उसका फ्लोर प्राइस है इथीरियम में, यानी कि इथीरियम $3000 का है इस वक्त। तो आप सोच सकते हैं 0.68 ऑलमोस्ट 70%, यानी कि इथीरियम को आप समझ लें तो 1700 और $1800 का जो है वो या 2000 का तकरीबन के करीब जो है वो उसकी लैंड आपको ख़रीदनी पड़ेगी, सिर्फ सिंपल लैंड। फिर उसके ऊपर बिल्ड करने जाएंगे आप चीज़ें तो आपको वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन अगर लेने जाएंगे तो वो 0.12 इथीरियम की होगी, डिफरेंट मिलेंगी आपको, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन आप बाय कर सकते हैं वहाँ यूज़ करने के लिए उसमें लैंड पे। फिर आपको एवेटार अगर आपको बनाने हैं या चाहिए होंगे तो वो तकरीबन एक इथीरियम का, यानी 3000 का एक एवेटार मिलेगा आपको वहाँ पर यूज़ करने के लिए। फिर इसके अलावा डिफरेंट और जो दूसरे बोनसेस जो हथियार हैं या जो भी ड्रिल मशीन या जो कोई भी है, तो वो तकरीबन आधे आधे इथीरियम की, यानी कि 1500 $2000 की मिलेंगी आपको। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है इसको ख़रीदना, इसको खेलना, इस गेम को गेम बिल्ड करना, ताकि फिर आप अर्न कर सकें, लोगों को इनवाइट कर सकें। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते अभी, तो आप एटलीस्ट इसका जो कॉइन है वो, अगर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, थोड़े बहुत आप कॉइन्स के ख़रीद के लगा सकते हैं। रिसेंटली अभी जो है एक कॉइन पे अवेलेबल है इससे कॉइन, रिसेंटली जो है अभी इसने थोड़ा जंप लिया है प्राइस में ऊपर, तकरीबन आप देख सकते हैं 30% ऊपर है। तो कोई चीज़ भी 30% एकदम से ऊपर आए तो उसको फौरी तौर पे ना बाय करें, थोड़ा रुक के देख लें कि होता है नीचे आ जाए, जैसे कि अभी थोड़ा सा आया भी है नीचे, तो आप उसको थोड़ा नीचे आने दें, अगर कूल डाउन होना है फिर आप बाय करें, अगर बाय इन करना भी है तो। इसके अलावा इसके टोकनॉमिक्स की बात हो गई, इसका जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वो चंद चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं अगर कोई नया प्रोजेक्ट उसको उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, कि कितनी ज़्यादा जो कम्युनिटी है इन्वॉल्व है, कितना एक्टिव सोशल मीडिया है। तकरीबन 1 लाख के करीब फॉलोअर्स मौजूद हैं इनके, 1000 से ऊपर ट्वीट्स कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा एक्टिव सोशल मीडिया है। तो I'm sorry। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं प्रोजेक्ट की। फिर इसके पार्टनरशिप्स इनकी, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे दूसरे गेमिंग वर्ल्ड के इंडस्ट्री के साथ इनकी पार्टनरशिप्स हो गई हैं। एक हमने देखी जुरासिक पंक्स की, इसी तरह से और दूसरे भी आप जाके इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है NetVRk.co। और फिर इसके टोकनॉमिक्स आप यहाँ देख सकते हैं, लैंड की परचेज़ आप देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कॉइन पे अवेलेबल है, कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेट को जिसको फॉलो कर रहे हैं इसको, MEXC पे भी है अवेलेबल, ग्लोबल पे और डेक्स पे भी है। मुख्तलिफ स्टेकिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट सारी की सारी फील्ड हो चुकी हैं, कोई अवेलेबल नहीं है स्टेकिंग इस वक्त करने के लिए यहाँ पर। मुख्तलिफ कलेक्शन मैंने आपको दिखा दी है ओपन सी पे जो इसके मौजूद हैं ये। फिर इनकी पार्टनरशिप्स, ह्यूज पार्टनरशिप्स, सारे बड़े बड़े नाम आप देख सकते हैं उनके साथ इनकी पार्टनरशिप्स हैं। कार्डानो के मैं ख़ास तौर पे देख रहा हूँ, काफ़ी नाम यहाँ पर रिलेटेड, लेकिन ये कि और दूसरी चेन्स के भी नाम हैं मौजूद के उनके उनके जो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन चेन्स से उनके साथ इनकी पार्टनरशिप हैं। जो ब्लॉक चेन्स पे अवेलेबल होगा, मैंने बताया आपको, इथेरियम पे, पॉलीगॉन पे, सोलाना पे, कार्डानो,
Polkadot, Binance Smart Chain, XRP, Flare, Avalanche, Elrond और Hedera। तो ये सारी बड़ी जितनी भी हम जानते हैं चेन्स को मार्केट में, उन सब पे ही तकरीबन ये अवेलेबल है या होगा अभी। तो मैंने तो इथेरियम में ही देखा है इसके सारे NFTs, और किसी चेन पे नहीं देखे। इन्वेस्टर्स की एक बड़ी लिस्ट मौजूद है इनकी, एक जो मेटावर्स के इन्वेस्टर पार्टनरशिप्स हैं वो, प्लस ह्यूज टीम बिहाइंड इट, बहुत ही बड़ी टीम जो कि इसके पीछे काम कर रही है। कोई ऐसा नहीं कि एक दो बंदे बैठे हुए गैराज से काम कर रहे हो। तो और पूरे सोशल मीडिया का नेटवर्क इनका एक्टिव। तो ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट की निशानियाँ हैं। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है इसमें, और अगर आप इनके जो वाइट पेपर वगैरह पढ़ लीजिए उसमें सारी डिटेल मौजूद है। इसकी वेबसाइट पे जो है सारी डिटेल्स मौजूद हैं, किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ का मैंने वैसे भी आपको दिखा दिया कैसे बाय कर सकते हैं आप इस टोकन को, और उसके हमने अब साइट भी डिस्कस कर ली है अभी कहाँ से कहाँ जा सकता है। नवंबर में जब सारे कॉइन्स ऊपर थे तो ये भी ऑलमोस्ट जो था $7 क्रॉस कर चुका था। तो इस वक्त भी अगर आप देखें इसके ऑल टाइम हाई से भी, तो इसका कॉइन जो है वो $2.5 पे बैठा हुआ है। तो यहाँ से भी डबल 3 टाइम जो है ईजिली हो जाएगा, अपने ऑल टाइम को हिट कर सकता है। लेकिन बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगा। आई हैव माई फीलिंग कि वो बहुत कम कॉइन है, बहुत इसकी यूजेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, इसकी जो इसका जो फ्रेमवर्क है बहुत बड़ा है, इसका जो इकोसिस्टम है बहुत बड़ा है, और ये बहुत तेज़ी के साथ जो है ग्रो करेगा आने वाले दिनों में। 2022 ऐसे भी कहा जा रहा है कि मेटावर्स का ही जो साल होगा। और कार्डानो पे जो इसके जो भी इसकी जो NFT या जो भी इशू होंगे उस पर हमें नज़र रखनी होगी। मैं रखूँगा, आपको बताऊँगा, उससे आगाह रखूँगा ताकि आप सब फ़ायदा उठा सकें। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आज दूसरी स्ट्रीम थी ये। प्राइसेस अभी देख लीजिए, तकरीबन 40 मिनट की स्ट्रीम करने के बावजूद प्राइसेस वहीं के वहीं मौजूद हैं अभी। और ये 3 जो वीकली चार्ट है उसको हमें बहुत क्लोजली फॉलो करना है कि ये कहाँ जाके एक दो दिन में ये कैंडल कहाँ जाके बंद होती है और क्या आगे हमें प्राइस एक्शन नज़र आते हैं इसमें। आई होप आपको आज के वीडियो से जो है लाइक ऑलवेज आपको बेनिफिट हुआ होगा, नया प्रोजेक्ट के बारे में पता चला होगा, सीखने को मिला होगा कुछ। और हो सकता है अगर आप डिसाइड करें अपना फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए इसमें इन्वेस्ट करना, तो आपको उसमें काफ़ी बड़े फ़ायदे गेंस हो सकें आगे जाके। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली रोज़ाना की बेस पे मिलती रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियोस को ताकि औरों तक भी जो है ये पैगाम पहुंच सके। शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।